Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. It's maths time for class 3. Today we are going to inshallah review the topics which we have already taught you in our previous mathematics videos. And why are we going to review them, beta? We are going to review them for online studies test. Beta, inshallah we are going to conduct your online studies test. Means वो तमाम मैटर या वो तमाम सिलेबस जो हम आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुके हैं, इंशाल्लाह उसका टेस्ट हम कंडक्ट करने जा रहे हैं. दैट टेस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड September working. Let's review the working. In July week 1 we studied about the place value chart and numbers name, also the smallest and greatest digits. राइट बेटा, इन तमाम टॉपिक्स को जो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं, आप इनकी वीडियोस डिटेल्ड जाकर जो ऑलरेडी आपके पास यूट्यूब पर सेव्ड हैं, आप जाकर वहाँ पर इनके लिंक चेक कर सकते हैं और इनको दोबारा से देखकर तमाम चीज़ें रिव्यू कर सकते हैं. राइट, यहाँ मैं आपको सिर्फ शॉर्टली टॉपिक्स का रिव्यू करवाऊंगी. राइट, इन वीक 1 यू स्टडीड अबाउट प्लेस वैल्यू चार्ट. Through this chart, beta, you studied the place value from and you also write the number names. In July week 2, you studied about expanded form and standard form. You learned to convert numbers from standard form to expanded form and from expanded form to standard form. Then in week 3, you learned to compare numbers. Means you learn to write the numbers which are greater, smaller or equal to the other numbers. Right, here you must remember that alligator who always opens its mouth to the greatest number. In this week you also studied the ascending and descending orders. In ascending order, you remember that we always write numbers from smallest to biggest number, and in descending order we always write numbers from biggest to smallest number. Right? Let's move towards August week 1. Here you studied about skip counting in 2s, 3s, 4s, 5s, 10s, hundreds and thousands. Then in August week 2, you studied about the most new branch for you of mathematics, that is geometry. Here you also studied about the basic concepts of geometry. They were point, line, rays, line segments and others. Then in August week 3, you also learned about the shapes. Here you reviewed some basic shapes and also learned about some new shapes like quadrilaterals, pentagon, hexagon and octagon. Let's move towards August week 4, in which you studied about adding and subtracting the greater numbers. You learned to add bigger numbers, where you learned how to put carries to the other digits, and also you learned to take borrows in subtraction. Right, then in September week 1 you studied about multiplication, where you learned how to multiply two numbers. You learned what do we mean by products. You also reviewed your tables as well. Clear? Now let's move forward towards the paper pattern of the exams or test which we are going to conduct inshallah. पेपर पैटर्न बेटा क्या चीज़ होती है? पेपर पैटर्न हम हमेशा से, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी देखते हुए आ रहे हैं, पेपर पैटर्न्स के थ्रू आपको ये पता चलता है कि जो पेपर आपके सामने एग्जाम्स में आएगा इंशाल्लाह, वो किस पैटर्न पे बनाया जाएगा. The paper pattern would be of 25 marks.
यानी कि टोटल पेपर जो होगा बेटा आपका वो कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का होगा। उसकी टाइमिंग्स होंगी 90 मिनट्स, मीन्स मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा का पेपर आपको होगा। और अब पेपर पैटर्न जो आएगा, यानी कि पेपर किस तरह से बनेगा, वो बहुत सिंपल है बेटा। दैट यू विल बी गिवन 5 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 7। आपको 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, कितने में से? 7 में से, ठीक। यानी कि 2 क्वेश्चंस की आपके पास वहाँ चॉइस होगी। अब क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? क्वेश्चंस विल बी कंप्राइज्ड फ्रॉम द टॉट मैटर एंड द गिवन रिटन वर्क विच विल बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू बेटा। यानी कि वो तमाम क्वेश्चंस कहाँ से लिए जाएंगे? उस ही तमाम मैटर में से जो आपको पढ़ाया गया है। लेकिन जैसे कि आपको मैथमेटिक्स में पता है बेटा, ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज़ वो क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आपने सॉल्व किए हैं कॉपी में, बल्कि उसके अलावा अनसीन क्वेश्चंस होंगे आपकी कॉपी में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कॉपी में तो वो एज इट इज़ नहीं आ जाएंगे, बल्कि वो थोड़े से डिफरेंट होकर आएंगे। उसके अलावा हो सकता है उसी डॉट मैटर में से आपको कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस दिए जाएं, और सॉल्व मैटर से ज़्यादा बेटा आपको वीडियोस के हर पॉइंट पे नज़र रखनी है। वो तमाम की पॉइंट्स जो आपको मैथमेटिक्स की वीडियोस में बताए गए हैं, उन तमाम को आपको लर्न करना, याद रखना, मेमोराइज करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। होप यू बेटर अंडरस्टैंड नाउ। गुड लक फॉर योर टेस्ट पेपर्स। Thank you so much. Allah Hafiz.